Hello students, today we have to start with the chapter number 1 from geography portion, resources in development in 10th class. Students, in 9th class we have studied about physical geography, right? Means we have studied related to India, size, location. Then we can say that we have studied physical features of India, drainage, climate, vegetation and natural disasters and hazards. That was basically related to 9th class, right? But in 10th class means the complete chapters which we have to study in geography portion, they all chapters, they are basically related to human geography, right? So human geography is basically having several branches. So in 10th class we have to focus on human geography. So today we have to start from the beginning, that is chapter number 1, resources and development, right? So resources and development is basically, we can say that it is a broad concept. ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, लाइक वी हैव टू स्टडी रिसोर्सेस एंड वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द रिसोर्स, और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ resources, right? So several resources we have to study, or we can say we have to study the means uses of these resources. We have to study classification of resources, how these resources are important to the human beings, right? So in this chapter basically we have to introduce several things, right? So chapter number 1, resources and development, right? So in this chapter first we have to introduce this topic, means we'll start with the introduction part as usually we used to do, right? Then we have to do the types of resources, right? Means several types of resources we are having. So in this chapter we'll study the types of resources also. Then we can say resource planning, means resource planning is very important. Means not only resource planning, normally whatever human beings they used to perform any kind of activity, we always do planning, because planning is very important, right? So if we'll do proper planning, then we can say proper resource development can takes place. Then we can say land resources, how much land resource we are having available in the country, that also we have to discuss in this chapter. Then land utilization, means how we are using our land part. So land utilization is also one of the important, right? Then land use pattern in India, means how we are using the land part in different patterns in India, that also we'll discuss in this chapter, resources and development. Then land degradation and conservation measures, means how the land is degrading and how, means what kind of conservation measures we have adopted for, means we can say for the protection of land resource, right? So means soil as resource also we'll also have to discuss. So we'll discuss that what is land and what is soil. So means we can say that we'll discuss all these things in this chapter, soil as resource. Then the important thing which we have to study in this chapter, that is related to introduction of the chapter. So right students, means we can say that everything, means if we talk about the resource, means how you will define the resource. तो रिसोर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं दैट एवरीथिंग available in the environment which can be used to satisfy our needs, right? Means everything which is available in the environment which satisfy human needs. जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, वो सब क्या है, रिसोर्स हैं, क्योंकि वो हमारी नीड्स को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर रहा है. So everything which is available in the environment which satisfy human needs, that is basically called resource. But these resources should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, that is basically termed as resource. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कहीं भी आपको बोर्ड में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट डिफाइन रिसोर्स, तो देखिए ये डेफिनेशन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. If we'll define the resource, means everything which is available in the environment that can be satisfied or that can satisfy our needs, that is basically a resource. But आपके जो कुछ technical words हैं जो बहुत important रखते हैं, वो technical words आपको इन definitions में use करने चाहिए. और वो technical words आपके कौन से हैं? Technologically, means we can say that these resources should be
technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. These three words, they are very important in this chapter. Resources को आप define करोगे तो इनको आपको use करना है, because ये technical points हैं जो आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाते हैं, right? So मीन्स इसको देखो, इसको समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है. देखिए हमने बोला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. देखिए सपोज एक मंदिर है, राइट, और ये मंदिर किसी ना किसी लैंड पार्ट के ऊपर है, राइट, ये मंदिर बना हुआ है. अब यहां पर हमने तीन टेक्निकल पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए: टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. देखो हमने क्या किया कि हम ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी को तो बनाया, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट किया. हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया. हमने टेक्नोलॉजी का किससे डेवलपमेंट किया? हमने फिजिकल एनवायरनमेंट को यूज करके हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया. ठीक है, अब हमने फिजिकल एनवायरनमेंट को यूज करके, मतलब हमने नेचर का यूज करके हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, और उस टेक्नोलॉजी से हमें पता लगा कि इस मंदिर के नीचे जो लैंड पार्ट है, यहां पर हमें ऑयल के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, राइट, मीन्स ऑयल रिसोर्सेज दे आर अवेलेबल. हम क्या हुए, हम टेक्नोलॉजी से हमने एक्सेस किया, हमें पता लगाया कि इस लैंड पार्ट के नीचे ऑयल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है. लेकिन उस ऑयल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है. नाउ द सेकंड टेक्निकल पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल. नाउ अगर हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमें इकोनॉमी में कुछ बेनिफिट होगा? दैट इट इज फिजिबल टू द इकोनॉमी. क्या उससे कोई बेनिफिट होगा अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल. तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने टेक्नोलॉजी से इसको एक्सेस कर लिया कि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, विल इट बी अ इकोनॉमिकली फिजिबल? क्या इसकी सोसाइटी में डिमांड होगी? तो अगर इसकी डिमांड होगी देन वी कैन से दैट इट विल बी फिजिबल. देन वी कैन से कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब देखो इस ऑयल प्रोडक्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है इस मंदिर को यहाँ पे तोड़ना पड़े या डिस्प्लेस करना पड़े. सो विल इट बी एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी? क्या सोसाइटी इस मंदिर को तोड़ने के लिए एक्सेप्ट करेगी? अगर वो करती है देन वी कैन से दैट रिसोर्स कैन फुलफिल आवर डिमांड. अगर वो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो हो सकता है यहाँ पर उस रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, right? So this is basically we can understand means related to these technical words: technology accessible, economically feasible and culturally acceptable. So this is very important part, right? Now a triangular means system we are having, that how these resources they are interdependent on each other. So we can say that here these resources they are interdependent on each other, means through physical environment we have developed technology, and through various kind of technologies we have developed various kind of institutions, and through these institutions we are dealing with physical environment. देखिए आप, ह्यूमन बीइंग तो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हु इज डीलिंग विद फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड विद इंस्टीट्यूशंस. तो देखिए ह्यूमन बींग्स ने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में डील किया और वहां से हमने टेक्नोलॉजी बनाई, या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट से हमने इंस्टीट्यूशन बनाया और उस इंस्टीट्यूशन से हमने अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करी. सो वी कैन से दैट ह्यूमन बींग्स दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डीलिंग विद फिजिकल एनवायरनमेंट, or we can say technology, while making any kind of technology or while establishing any kind of institutions, and vice versa also we can say. मीन्स ये इस तरीके से भी हो सकता है. तो ये किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि इस तरीके से, मीन्स हाउ दीज रिसोर्सेज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. मीन्स अगेन आई एम सेइंग कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है, मीन्स एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन रिसोर्स, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड दीज रिसोर्सेज शुड बी technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. That is basically termed as resource.